today we have the snow leopard man of India, wildlife conservation photographer Ismail Sharif. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you so much for the opportunity of bringing snow leopards to the forefront here. सबसे पहले स्नो लेपर्ड्स की बात करते हैं. 718 ही नंबर पहुंच गया है और आप एक कंजर्वेशन फोटोग्राफर हैं. तो कंजर्वेशन फोटोग्राफी किस तरह दे वर्क टुगेदर, हाउ इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द बिग कैट्स और leopards, snow leopards in particular? Conservation is a completely different entity in itself, right? But थोड़ा टाइम लग जाता है टू असेस, स्पेशली स्नो लेपर्ड्स की जब हम बात करते हैं कि इतने हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो एक तो कैमरा ट्रैप्स हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कितने इंडिविजुअल्स हैं. सिमिलरली जब फोटोग्राफर्स जाते हैं तो वो जो स्पीशीज़ के फ़ोटोज़ लेते हैं उसमें वो भी एक एडवांटेज होता है, बिकॉज कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई जो कैमरा ट्रैप में नहीं आता है वो कोई फोटोग्राफर को मिल जाता है. एंड दैट इज़ हाउ द नंबर्स ग्रो, दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है फील्ड में. आप कैमरा ट्रैप्स का जो एंगल ऑफ व्यू होता है, इट्स अ लिमिटेड एंगल ऑफ व्यू, वेयर एज अ फोटोग्राफर यू आर वॉकिंग अप एंड डाउन द माउंटेन्स एंड आप बर्फ़ में हो, आप फील्ड्स में हो, आप जैसे मंगोलिया में आप डिज़र्ट में हो. everything adds to the whole idea of conservation and knowing more about the animal. तो बड़ा वाइड लैंडस्केप है. यू हैव द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया फॉर इंस्टेंस. 193 स्क्वायर किलोमीटर्स का उनका रेंज होता है. आप नेपाल जाओगे तो एनीवेयर बिटवीन 4 and 16 स्क्वायर किलोमीटर्स का रेंज होता है. तो व्हाट आर द रियल चैलेंजेस ऑफ ट्रैकिंग देम एज अ फोटोग्राफर, बिकॉज यू आर ऑन फुट, यू आर क्लाइंबिंग. तो रियल चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि जो हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे दूसरे वाइल्ड कैट्स को जो ट्रैक किया जा रहा है, फोटोग्राफ लिया जा रहा है, यू आर ऑन अ जिप्सी फॉर इंस्टेंस, तो इसमें क्या मेजर चैलेंजेस है फॉर अ फोटोग्राफर? Mountains to begin with, and the idea of photographing a snow leopard, उसका मज़ा तभी आता है जब आप स्नो में देखो, राइट? तो स्नो तभी होता है जब आप माउंटेन्स पे हो. एंड टू ट्रेवर्स दैट माउंटेन इज़ नॉट ईजी. कभी कभी हमारे जो ट्रैक्स होते हैं उसमें 2-2, 3-3 फुट का बर्फ़ होता है, एंड उसमें आप ऊपर नीचे जा रहे हो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जब तक कि आपको उसके पगमार्क्स ख़त्म नहीं होते या फिर आपको कोई साइटिंग नहीं होती. यू जस्ट वॉकिंग थ्रू आउट द डे. फिजिकल एक्सर्शन इज़ आई थिंक एट इट्स पीक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्नो लेपर्ड्स. एंड हम जो स्ट्रगल करते हैं, द स्नो लेपर्ड्स डू इट लाइक दैट. उनके लिए तो इट इज़ अ वॉक इन द पार्क. This has got to be the main reason why for the longest time not too many people even went for snow leopards, because इतना difficult हुआ करता था. अभी हमारे यहाँ equipments आ गए हैं, कपड़े, we are equipped to go to -20 -30 degrees centigrade. इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है even for research purposes. जी, आपने बात करी कि टू मैनी फोटोग्राफर्स अब हो गए हैं. अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं स्नो लेपर्ड्स का ही अगर हम ले, तो नाउ देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कैप्चरिंग स्नो लेपर्ड. पहले 1 या 2 ही लोग होते थे, तो इससे भी कुछ एक इंट्रूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है फॉर द स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड का एडवांटेज यही है कि वो करीब से नहीं मिलता है. तो इवन दो अभी स्पेशली स्पीति में अगर आप देखते हो तो इन पीक सीजन आपको 80 to 100 फोटोग्राफर्स तो मिल ही जाते हैं. इसमें I'm not denying the fact कि थोड़ा intrusive हो सकता है, but the fact also is कि इतना दूर होता है कि it is not going to be that much of a hassle for the snow leopard. थोड़ा बहुत तो obviously होता है, because out of nowhere there are so many eyes on the snow leopard. तो उसके restrictions भी हो जाते हैं. जैसे हम अगर जनवरी में देखते हैं तो लोग कम होते हैं फोटोग्राफर्स, तो उसका मूवमेंट कंप्लीट होता है. it is doing everything it needs to do. फरवरी में बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. आपको सवेरे दिखेगा तो शाम तक, बिकॉज इट इज़ क्रेपेस्क्यूलर, विच मीन्स कि डस्क एंड डॉन पे ही एक्टिव होता है. आप फरवरी में सो मेनी पीपल, वो जब सनसेट हो जाता है तभी मूव करता है. तो उसके और क्या चैलेंजेस है? क्योंकि यूजुअली केव्स में पाए जाते हैं. इफ इट्स अ फीमेल, इट्स गिवन बर्थ टू मे बी 1 or 2 अदर किटन्स इन दिस कैट फैमिली. तो आप इसको कैसे ट्रैक करते हो स्पेसिफिकली इन इट्स हैबिटेट? एक तो उनका रेंज होता है, दूसरा उनका हैबिटेट होता है, प्लस वो वाटर सोर्स के पास नहीं होते हैं. एंड विद द चेंजिंग सीजन दे टेंड टू गो इनटू द ऑल्टीट्यूड एरिया, समटाइम्स मोर देन 2700 meters above as well.
क्योंकि जो उनका prey है they migrate. तो how do you track it specifically to its habitat? It's a whole circle. I mean, snow leopard जब आपने जैसे कहा very rightly so, it is following the prey. तो prey आता है जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है on the top of the mountains, it comes down. And ये average इसका basic time होता है November, December. It comes down, उसके पीछे snow leopard आता है. The whole of winter it is in the lower regions, which is 3,500 meters. And that is the best time to track them because एक तो it is accessible for us. हम 3,500 still बिना oxygen tank से जा सकते हैं. But अगर snow ना हो, which is the situation right now in Spiti and Ladakh, track करना बहुत मुश्किल हो जाता है. It's very easy to track the pug marks in the snow. And उसको follow करते करते हमको ये भी पता चल जाता है कि कौन से direction में जा रहा है. And अगर खरीफ से है तो कितनी देर हो गई है जाके. And अकेला है या बच्चों के साथ है या फिर it's a mating pair. All of that plays into it. But because अभी इस बार snow नहीं हुई है, the challenge majorly was कि कहाँ गए हैं. Because we couldn't track them, we couldn't see them for about 18 days at a stretch, जो किब्बर में स्पीति वैली में पहली बार हुआ है. Right. आप IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. From this concrete jungle to the real jungle, ये shift कैसे आया? It was never planned. And frankly, मेरे family में ना कोई photographer है, ना anybody is interested in wildlife. But एक in fact, funnily enough, camera लिया था because I was traveling, I was studying in Europe. And I was traveling a lot of cities, तो वहाँ से फ़ोटो लेके यहाँ दोस्तों को भिजा के जलाने के लिए लिया था to be honest. But वो ट्रांजिशन ऐसे हो गया कि उसके बाद फिर घर के बाजू पे एक पॉइंट था, लोटस पॉइंट, वहाँ से बर्डिंग चालू हुई है. एंड बर्डिंग आई थिंक वाज द कोर ऑफ और द बेस ऑफ माय इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ. उनके बिहेवियर, द वे दे मूव, द वे दे फ्लाई, द वे दे फिश, स्पेशली द किंगफिशर्स. And it just went on a step at a time. वहाँ से tigers, leopards, and then leopards देखते देखते I saw this my very very dear friend, I call him my elder brother, Mr. Dhirtiman Mukherjee. उनकी फ़ोटो देखी मैंने Savers magazine पे. And वहाँ से the whole transition, the whole paradigm shift happened, wherein I moved completely towards snow leopards. तो photographers के अपने level of expertise होते हैं, recognition होती है. You have been recognized by bespoke and luxury brands like Cartier and Rolex. So उस level पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, they're very niche group of photographers. We have shot by chance जहाँ पे वो contribute करते हैं अपनी photography images जो हैं. तो what would you tell our viewers about achieving that level of photography? Persistence and dedication. Also, I don't want to say the word discipline because मेरे में ही कम है, but that helps. Right. And this is my 18th year into this field, and now after so many years is when I'm getting to see the names like Washington Post, Rolex, Cartier, and it hasn't been easy, it hasn't been cheap, it has been very taxing in all aspects, in all paradigms. Right. But I think persistence and also there's another photographer and cinematographer, Kalyan Verma. He had mentioned in one of his very early talks that give your work out to some people so that it comes back to you. And that's exactly what I've been trying to do. I've associated myself with NABU from Germany, Snow Leopard Trust, Snow Leopard और दो NGOs हैं, which is High Asia Habitat Fund, जो Voyager expeditions चलाते हैं. And what's happened with that is the more I gave to them, the more my wings became bigger or they expanded, and I got the reach to so many international organizations कि वहाँ से फिर it all came back to me, and now I am where I am. That's the joy of giving. Absolutely. Right. Absolutely. तो गिविंग की बात हुई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर या शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी तरह से. Right. उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहें, एंड हाउ इकोनॉमिकली वायबल इट इज टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? If it's a passion, it's not that difficult. But I would say to begin with, know your tools. Because creativity, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ऐसे फ़ोटो लेता हूँ, I love silhouettes, I love sunsets and sunrises, but that doesn't mean कि you should also. So I would suggest, every time this is the key thing I stress on,
learn your tools, learn how to use your camera, see what are the restrictions and opportunities of the lenses that you have, and build on it. I think once you know how to use something, आप खुद से उसको capitalize कर सकते हो, खुद से उसका gain हासिल कर सकते हो. And other than that, as far as economical is concerned, मैं मजाक में बोलता हूँ, either you should have a very rich father or father-in-law to pursue this to the extreme. And then you have to bring marriage in between also. That's the, yeah. Okay. So, very interesting. Personality, taste and economics are very important aspects of your profession in photography. महंगा हो गया, travel, stay, Sure. equipment, telescopic lenses and of course a camera itself जो नए-नए models आते हैं with different features. अगर हम if we get away from this, जो photographers की एक भूमिका ये रही है कि they are able to also track climate changes. जैसे अभी जो है the snowfall has been very scanty. For instance, गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया गेम्स होता है वो पोस्टपोन हो गया because of the lack of snowfall. Right. ये artificially create करना बहुत मुश्किल है. तो from the point of conservation, climate change, what is your view? क्योंकि आप snow leopards को track करते हैं. It's getting difficult by the year, to be honest. And ऐसे नहीं है कि at least स्पीति में snow पहली बार नहीं पड़ा है. I think it's a cycle also. 2018 there was no snow. 2020 there was barely enough snow. इस बार it's hitting us hard because there's no snow at all. Not even at the peaks. I think Kanamo, which is the highest peak in the region, बस उसके right on top there's barely any snow right now. And this is inversely going to affect the villages because वो snow से उनकी खेती बाड़ी होती है. The water that comes from it, the glacier and all of that. जो melt करता है. जो melt करता है in summer. And इस बार everybody is scared because बर्फ बिल्कुल नहीं है. जी. And इसका I mean there's so many big guns who are working on this and we're still lagging behind. So frankly I don't know how we can mitigate that. Because we've crossed that threshold at some point or the other, and it's a bit more difficult right now than before. So the snow leopards have gone up higher altitude because of the lack of snow and ice at the peaks? They keep moving. Like एक snow leopard को collar डाला गया था snow leopard trust ने जो मंगोलिया में डाला था. So his range turned out to be a male snow leopard 1,000 square kilometers. He went around 3 countries. So for them, their only requirement is survival. Progeny, meeting children, cubs, and again marking their territories. तो उनके लिए whatever it takes, they will just go for it. अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो they'll walk a little more, go for the next village, next country, next state, whatever it takes for them to eat, because उनके लिए तो कोई border है नहीं. Right, right. उनके वीजा की जरूरत नहीं वीजा की भी जरूरत नहीं होती है ना. Well, climate change is for real, and I think we all have to understand that there is no planet B, and we have to take care of this. Absolutely, unless Elon Musk gets successful. Right. You also do astrophotography, bird photography. आप करते ही हैं. एक कुछ major difference होता है when you are capturing the birds or when you are capturing the wild cats or any animal in the wild for that matter. There is a huge difference in my personal opinion. एक तो जब wild cats होते हैं उनका एक route होता है, routine होता है, and they follow that. They have this thing, innate nature wherein they go around, mark their territory. They have to eat, so they have their hunting areas of sorts. I mean not particularly, but some of them have their favorite spots. जैसे अभी सतपुरा में, meadows में, every other day there's a hunt that's happening. Similarly, snow leopards also have their territory, and we also have come to a conclusion that there are specific points where they come and they cross every time. They mark their scent, they scrape their scruff, and they just follow that path basically. That is what makes it easier for us to keep a track of them. अगर यहाँ नहीं मिला तो यार वहाँ try करते हैं. अगर वहाँ नहीं मिला तो let's try in that ledge या वो gorge में देखते हैं. For birds, it becomes a little more difficult. एक बार उड़ गया तो उड़ गया. Then it's gone. Then we don't know where it's going to go and sit. So comparatively, I feel it's a lot easier to shoot wildcats specifically, not just every animal. Because again, आप ungulates देखते हो तो if they move with wherever the food is. Speaking about the food source and the prey of the snow leopard, जो उनका ecosystem है, Right. even the prey is very interesting. जो ibex है,
your blue sheep and all these other animals of prey for the snow leopard, ये अपने में they're very hardy animals and they're extremely unique in terms of what they can do in altitude. तो क्या are they also a subject of your photography? Absolutely. I love shooting common subjects and try to come up with excuse me, try to come up with a little bit of a unique perspective to them. I love silhouettes. तो especially अगर हम ibex की बात करते हैं तो जो cliffs पे जो they climb straight up, so that is very interesting for me. बस मुश्किल से इतनी सी जगह मिलती है आपको and they are climbing and not just the big ones, even the young ones. And I filmed that a little bit and I'm in awe every time. I mean, not just the snow leopard. Snow leopards तो खैर ठीक है, he's got his own aura, his own charm and everything to it. But even the prey bears, the blue sheep, they're on such highs के उसको देख के मेरे सर में दर्द होता है. So it's amazing how every creature of nature is so well equipped and so well capable of taking care of its own environment. Right. Well, I think it was a very interesting discussion, Arjun. Snow leopards के बारे में एक बहुत deeper perspective मिला. We would like to thank you for joining us and enlighten our viewers on snow leopard and on wildlife photography. Thank you so much. Thank you very much. I appreciate the call and I hope more and more people start loving them because that is when we save them.